चलो चेक करते चलता है कि नहीं। यस गाइस, हे गाइस नमस्ते। और आज इस वाले वीडियो हिंदी में होने वाला है। मैं अभी हूँ मेरे लैब में, मेरा सारा काम खत्म हो चुका है और अभी बजा है शाम के 6:15 और आज हम करने वाले हैं एक 10 साल पुराना एक इंस्ट्रूमेंट है, उसको हम ठीक करने वाले हैं। तो वो वाला इंस्ट्रूमेंट है ये, और ये कितना पुराना खटारा एक सीपीयू है, और इधर एक पी लूप ट्रेसर है और इधर एक मॉनिटर है। तो इन सबको हम आज ठीक करने वाले हैं। चलो पूरा ये वीडियो हिंदी में होने वाला है, हिंदी और इंग्लिश का मिक्स। इंग्लिश और मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, सो डू have feedback in the description. First of all, we have to declutter this table, and once we do that, we have to check whether these instruments are working or not. Let it take 1 day or 2 days, but we will make it work. It was last used in 2015, and it's 2026. 15 or 16 it was used last time. And let's get started. So first of all, we have to check the CPU. So it might be Windows XP. Let's see when it was. Okay. Given it's Intel Core 2, so hopefully we can turn on the CPU. If it doesn't work, we have multiple CPUs there. We'll take this computer and attach everything to that. Oh guys, what he is working? What? This is a lab. Yes, it is. You made it cinema hall. Obviously. Hanging on, walking tall. So one of the UPS wasn't working, so we have to change it. Oh sorry guys, I have to. This video is in Hindi, right? Okay. तो एक CPU काम ही नहीं कर रहा था, तो हम उससे चेंज करने वाले। ये वाला CPU काम कर रहा है। या take it. Some days I got no use for it all. Okay. So we have a mouse pad that is completely torn, so it would be better if you throw it dustbin in this table out. Working hard, making. ये पूरी की पूरी नई है. It's completely new. And guys, let's talk in English. मेरा हिंदी उतना सही नहीं बैठ रहा, तो ये पूरा नया है, पूरा एक दिन भी यूज भी नहीं हुआ शायद, और 10 साल से ये बंद पड़ा है। ये ऑन ही नहीं हो रहा है। ऑन हुआ। Oh guys, it's broken. Display is broken. किधर broken? हाँ broken है। कीजिए, नहीं है, नहीं दिखेगा। broken होता तो आधा नहीं आता। ठीक है, देखते हैं, पर उतना लाइट भी नहीं आ रहा है इससे, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? चलो कोई बात नहीं, चल गया। VGA चाहिए हमें, तो VGA लेके आपको लगाते हैं। तो VGA मिल गया है, चलो उससे कुछ हो सकता है तो कर देंगे। मैंने 8 महीने पहले इसे चेक किया था, पर वो वर्क नहीं कर रहा था। तो 8 महीने पहले? हाँ, इसका हमें रैम निकाल के चलाना पड़ेगा, रैम निकाल के पोंछ के रबर से पोंछना पड़ेगा। चलो चेक करते चलता है कि नहीं। यस गाइस, सिस्टम ऑप्शन नॉट सेट F1. We want some keyboards. Fine, I can bring it. सुबेंदु जी, माउस लेके आइए। माउस क्या ये कुछ ऐसे बैठे रहते हैं ये। ओ वाओ, चल गया गाइस, चल गया। अब कुछ देखते हैं। चलो इसे इथेनॉल से पोंछ लेते हैं, थोड़ा अच्छा दिखेगा। एस्टोन से पोंछने से खराब होगा। ये 50 साल पुराना कंप्यूटर, खटारा कंप्यूटर ऑन हो रहा है। ठीक है, हम इसमें SSD डाल देते हैं। आटा SSD चाहिए गाइस, इसमें NVMe का नहीं स्लॉट होगा, बहुत पुराना है। पतला वाला जो स्टिक होता है उसका नहीं स्लॉट होगा इसमें। ठीक है, ये जब तक 2 साल बाद जब ये ऑन हो जाएगा तब हम देखते हैं। तब तक हम टेबल क्लीन कर लेते हैं। I set to thinking I could make something of me, playing every game except the lottery, serving everybody. वो वाला से जो ऑन ही नहीं हो रहा था, तो रेसिपी को चेंज करना पड़ेगा। State of bad company. Foolish notions. तो फाइनली हमने सेटअप कर दिया है, पर ऑन ही नहीं हो रहा है।
हमें सॉफ्टवेयर नहीं मिल रहा है, इसका सॉफ्टवेयर इसमें है तो इसका हार्ड डिस्क लगा के चेक कर रहे हैं, अगर चल गया तो बहुत ही अच्छा है, नहीं चला तो और किसी लेयर से हमें लाना पड़ेगा सारा सॉफ्टवेयर और इसमें इंस्टॉल करना. So finally we have got all the softwares and we have to install everything in this computer, but we are hungry and it's 7:45 p.m. and let's have our dinner and we'll start again working. Thank you so much for watching. Tinnadi ki pokam. Okay, you stay here. Let's play. You came along. So 15 days back I started repairing a instrument and an instrument and I couldn't repair it. So today we are going to complete the rest of the tasks that is left in this instrument, the P loop tracer, and just now I have started it and kept some sample in this sample folder and connected it. It's not clearly visible maybe. So there is a palette here. Now we are going to start this computer. So I have installed all the softwares on that day. Okay, I have started this particular app for 5 or 7 times maybe. Okay, let this be a test sample and the thickness of the sample is 1.5 mm. Area is around 60 mm, 62 mm. 62 mm. Okay, then everything is fine. Fatigue test, no. Okay, there is some problem with the path file access. Okay, this is the problem with this testing sample set. Sorted sample sorted diagnostic. I don't know the username. Let's say 1. Password is also 1. Okay, username password incorrect. Okay, the problem is current is being passed through the sample, so it couldn't polarize, so we need another sample to do that, so I have to replace the sample. Still it is showing some problem here. Oof. Let me try with an AC current first. So I tried to repair that, but later on I understood that won't work in Windows 7, 8 or furthermore larger CPUs, larger versions of Windows. Actually that only works in Windows XP and some Windows 7 softwares, and that's the problem, and I don't want to waste my time on that computer. And I asked the seniors, 10 years back seniors, I called them and understood what's the problem with that P loop tracer. I got to know that actually it's completely broken down from inside, in the sense there is some problems in the circuits. So okay, whatever it is, thank you so much for watching. I tried to do something but it didn't work out. It's fine. I tried it for 15 days and it didn't start it out. And thank you guys for watching the video. I don't know who it's watching. Bye. You came along and lifted me up. The going got tough, but the tough got some love.